I am modeling sample P1 C345। मैं ये वाला मॉडल करने लगा हूँ। इसकी थिकनेस ऑफ ट्यूब है 0.841। इन्हीं में एक ही ऐसा शेल बनाऊंगा जो कि कॉलम के ऊपर जाके ऐसे चढ़ जाए, और इसकी ये वाली जो थिकनेस है ये वाली TF जो कि ये है, मैं ये मॉडल करूंगा। उसके बाद है सर्कुलर स्टील ट्यूब जिसकी थिकनेस ये वाली इसके ऊपर जाकर फिट होनी है। FRP ट्यूब थिकनेस, स्टील रेनफोर्समेंट रेशियो, स्टील का ग्रेड है 345 और ये प्रॉपर्टीज में यूज होगा। स्टील रेशियो है 5.2%। ओके, तो ये ऐसा कॉलम है जिसके ऊपर आपके शीट बैठी बिहेवियर हाई स्ट्रेंथ स्टील ट्यूब कॉलम्स। Total sample का diameter 200. This is the diameter of column. It has a circular steel tube with diameter of 125 millimeter. Sorry, inside. Inside, okay, not a big issue. I'm just understanding that there is a steel tube as well as FRP jacket. This is the jacket, sir? Yes, external. But where are the detail of jacket? I think only thickness is mentioned there for jacket. And what about thickness of the tube? यही तो चीज़ है, हमें भी कंफ्यूज कर रही थी। इसमें ना तो वो दी हुई प्रॉपर्टीज दी हुई रिइंफोर्समेंट बार मतलब फिगर में भी नहीं दी हुई। टेबल बताएगा ना, टेबल बताएगा, ये इधर टेक्स्ट बताएगी इसके अंदर की इसकी जो डिटेल्स हैं। ये देखें, हियर इज द सैंपल डिटेल। ओके, इंक्लूडिंग 2 अनकन्फाइंड प्लेन कंक्रीट कॉलम। 2 कॉलम ऐसे हैं जिनके अंदर कन्फाइनमेंट है ही नहीं। 4 कॉलम हैं जो कि PFCC हैं। अब ये एब्रिवेटेड हुआ है, ऊपर इसका डिटेल फाइबर कंक्रीट, पॉलीमर फाइबर कन्फाइंड कंक्रीट। ओके, एंड 12 PFCSC। ये कौन सा है? स्टील ट्यूब कन्फाइंड। ये 4 कॉलम ऐसे बने हुए हैं जो कि सिर्फ FRP कन्फाइंड है ऐसे, और 12 कॉलम ऐसे हैं जो FRP प्लस स्टील ट्यूब कन्फाइंड है। तो टोटल कितने? यस सर। स्टील सेक्शन है और इसमें सर्कुलर स्टील ट्यूब और FRP इन 12 के अंदर है। ये है FRP की थिकनेस, FRP जो कि एक्सटर्नल है। ओके, उसके बाद पहले 6 सैंपल में कोई ट्यूब नहीं आई, फिर यहाँ से आगे स्टील ट्यूब ऐड हो चुकी है। अब स्टील ट्यूब की डिटेल क्या है? स्टील है Q345, इसके पीछे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इलास्टिक मॉडल सारा Q345 का छुपा हुआ है, प्रॉपर्टीज में यूज होगा। अब स्टील ट्यूब की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
की वेरिएबल हुआ थिकनेस ऑफ FRP जैकेट 0.841 है और बाजों में डबल प्लाई है तो इसका डबल हो जाएगा, वो मेंशन है, यानी FRP की थिकनेस है। यानी मुझे FRP की एक इस तरह की ट्यूब बनानी है जो कि आप कॉलम के ऊपर आकर एक्सटर्नली चढ़ जाएगी। एंड I have to add also a steel tube, ठीक है, इसका ये क्लियर हो गया कि ये स्टील ट्यूब इस सैंपल में FRP ट्यूब आ गई, शीट आ गई। अब स्टील ट्यूब आनी है जिसका डायमीटर है ये, क्योंकि ये सर्कुलर स्टील ट्यूब है ना, इसके अंदर ये देखें सर्कुलर स्टील ट्यूब और ये एरो से शो किया हुआ है, ये सर्कुलर स्टील ट्यूब जिसमें क्रूसीफॉर्म सेक्शन है, वो नीचे मेंशन भी है ये क्रूसीफॉर्म सेक्शन। क्रूसीफॉर्म सेक्शन किस तरह का, ये एरो से ये शो हो रहा है इस तरह का, दो W सेक्शन या I सेक्शन आपस में क्रॉस में मिले हुए। These 6 columns are in this shape. These 6 columns are in this shape, and upper 6 have no steel tube. But from upper 6 columns, 4 have FRP sheets only, and no internal cruciform, no internal tube. तो मैकेनिक्स अब समझ आ गई। कंक्रीट भी नहीं है नहीं, ट्यूब कंक्रीट तो है, वो तो भरा हुआ है, लेकिन फिल किया हुआ है। यस सर, कंक्रीट तो सब नहीं है। हाँ, पहले दो में कुछ भी नहीं है, पहले दो में सिर्फ प्लेन कंक्रीट का सिलेंडर कॉलम है बस, जिसकी हाइट 400 है, डाया 200 है। उसके बाद अगले दो हैं ये वाले, इनमें अगले 4 इनमें शीट लगी हुई है बस, सेम यही वाली शीट है, ऊपर वाली सिर्फ सिंपल प्लेन कंक्रीट कॉलम है, उसके अंदर ना बार है, ना ट्यूब है, ना क्रूसीफॉर्म, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल शीट ऐड कर दें तो these 4 will be manufactured. If we add sheet plus circular steel tube, then these 6 will be fabricated. If we add FRP sheet externally and cruciform internally, then these 6 will be formed. ठीक है, तो पहले हमें अपने पेपर के एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम को समझना होता है कि इसमें क्या हुआ, कितने सैंपल बनाए, उनमें चेंजेस क्या है, वेरिएबल कौन से हैं। अब मुझे इसका फुली समझ आ चुका है कि इसका क्या किया है। बस 18 सैंपल बनाए, उनमें 2 प्लेन कंक्रीट के हैं, अगले 4 हैं सिर्फ FRP शीट से कंफाइंड है, उससे अगले 6 हैं जिनमें FRP शीट प्लस सर्कुलर ट्यूब भी है, उसके बाद अगले लास्ट 6 हैं, they have steel tube plus they have cruciform plus external sheet. तो आपका जो वर्क होगा, you will pick only the lower these samples. Okay, you will not pick the first 6. Why? Because your topic is the modeling of composite columns. FRP confined composite. FRP confined means there is sheet, external sheet. Okay, there is the external sheet in all these columns. Next word in title is composite. Composite means some tube, some cruciform should be there. Steel section. And it should not. So you have to model FEM मॉडल बनाना है जिसका फर्स्ट लास्ट 12 में लास्ट 12 कॉलम्स, इग्नोर फर्स्ट 6 कॉलम। मीन्स आपने फर्स्ट 6 पे काम करना ही नहीं है, दोबारा मुझे ये बताना ही ना पड़े कि आप इनमें से मॉडल करके नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसकी गाइड, एक तो हमने ये बनाना है, दूसरा हमने बनाना है, एक तो ये है FRP, सेकंड चीज है स्टील ट्यूब, जो कि हमने इंटरनली ऐड करें। अब स्टील ट्यूब की डिटेल किधर है, ये देखिए यहाँ तो गिवन ही नहीं है, यहाँ सिर्फ बताया हुआ दिस इज सर्कुलर स्टील ट्यूब,
डिटेल हियर स्टील ट्यूब है। अब इसका डायमीटर कितना होगा ये देखें, इसका डायमीटर होगा 200 शीट का 200 मिलीमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल इसमें चलना है ना शीट में, लेकिन ट्यूब है इंटरनल और ट्यूब का डायमीटर गिवन है, ट्यूब हैज a diameter of 125 millimeter. What is the thickness of steel? Thickness of steel tube should be 0.8. No, this is the thickness of FRP. Yes, sir. Okay. Thickness of steel tube is not given. Only the steel ratio is given here, that is 5:2. There is something given here, sir. There is something written. Oh, great. Here is given, that is 4. The thickness of steel tube is 4 millimeter. यहाँ पे भी मेंशन होगी 4 mm भी आ जाएगा. No, here is given. It must be given in the table form somewhere. FRP ट्यूब की डिटेल यहाँ पे है. These are the steel coupons. Coupon कहते हैं सैंपल. ये FRP ट्यूब की जो टेस्ट की है उन्होंने. I think वो फिगर में दिया है डायरेक्ट. I will start with 200 millimeter, 180, 25, 4, 5 millimeter. 4 पे अलग 5 millimeter, 8 पे अलग 5 millimeter, 20 millimeter. No, I think figure में बस गिवन है, बाकी कहीं वो मेंशन ही नहीं है thickness. Give it for this. Here again 4. Not 4, this is something else. Here's not given the detail of thickness. All the columns tube had a same steel reinforcement ratio 5.2. So we can calculate it. Calculate करें steel ratio को. Area of column बताएं पहले मुझे. Diameter 200. Diameter 200 है. 5/4 d square करें. Thirty-one 400 square millimeter. Area of column है. अब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील ट्यूब बताएं मुझे. 125 का करें. 125 is internal. Yes, internal. यानी आप एरिया निकालें 129 के मुताबिक, उसमें से माइनस करें 125 के मुताबिक. 5/4 into 129 square. You're finding this part, sir? Yes, we are finding the hollow. We are finding the cross-sectional area of only red area. This part?
cube, not this one, only red line. We will find the area of external minus सर internal. यहाँ पे कॉर्नर में 13,069.8 किसी का माइनस करना है इसमें 13,069 minus. If we find the area of external wall of cube and minus the area of internal wall, we can find the area of this red line, cross-sectional area. क्या आता है? 798 millimeters. 798 square millimeters. So we find the rho st. That will be 798 divided by 31400. If we don't ignore the area of QQ again, 0.0254. multiply by 100. 2.54. Okay. So if we minus the area of cube from this also, 798. Look at area of cube involved है इसके अंदर, हमको माइनस कर देते हैं. अब क्या आएगा? 5.2 आना चाहिए. Sir, 2.6 or 2.5 के 5.2 आना चाहिए. What is wrong? Maybe some miscalculation because we don't have क्या वजह होगी? 2.5 आ रहा है. Sir, 5.2 कहाँ से लेंगे? 5.2%. C ratio 5.2. Here and that on either in this thickness of T2, that should be approximately 8. दूसरी ओर देख लेते हैं उसमें क्या दिया है. Sir, did you consider this thickness? 4 ही है, क्योंकि इधर ये भी 4 हैं, इनके भी 4 लिखे पड़े हैं और थिकनेस सेम है दोनों की. ये 4. यही आना है इसमें, क्या किया? नहीं यार, इसमें मतलब 4 लिखा हुआ है, कंसीडर इट 4 मिलीमीटर थिक. वही है यार, इसको आप रहने. अब हम इसको मॉडल करेंगे. ये देखिए, स्टील ट्यूब जब बनानी है, पार्ट में जाके यहाँ पे ये विद स्टील ट्यूब, इसका हम शेल बनाएंगे. ये सर बाहर लगाने के लिए. हम इसको शेल कंसीडर करते हो, हम इसकी थिकनेस बाद में डिफाइन कर लेंगे शेल की. होपफुली इसकी थिकनेस आ जाएगा ऑप्शन. ठीक है, अगर हम सॉलिड करके रेवोल्यूट कर दें फिर भी बन जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम शेल इसको शेड कर लें
हाँ एक्सट्रूजन होना चाहिए सॉरी एक्सट्रूजन होता है कि वो थर्ड डायमेंशन भी हो 3D में हो मैं कोऑर्डिनेट इंटर करूंगा 0 0 सेंटर में सर्कल लग गया अब हमारा डायमीटर है स्टील ट्यूब का 400 7 कितना 200 है तो इसको ना 200 स्टील ट्यूब बना रहा हूँ 125 yes sir 125 that is diameter but I have to give here the radius 65 divided by 2 62.5 52.5 so x-axis is 0 y is 62 so 60 that's not it's okay okay oh very slow no the keyboard is actually not working sometimes Zero and 62.5 interest. This is the steel tube now extruded and the height is exactly the same as that of column. Okay. The steel tube now we will make the FRP sheet. The FRP sheet external sheet of the diameter will be 100 radius, 200 total है तो 100 will be the radius. 200 diameter sheet over here. Now give the third dimension that will be same as the height of column. This is the sheet. Now nothing else. Now assembly. You care? Make them independent so that all parts should be easy from each other. Now place FRP sheet. See here, it is directly overlapping the sample. Yeah, added. Now steel tube. Click here and rotate here. Oh, it is exactly already on the location. No need to translate it to move from one direction to other. It is already fitting inside. So just apply here. You can see. If you will add OK, after applying OK, then two tubes will be added. So if you apply, next time cancel. If you want to apply, don't click on apply, just click on OK, will be added after selecting. So apply and OK are same. The tube has been added internally. Oh, there must be a complete cover. Tube should not be visible outside. So the height of tube should be less. There should be a concrete cover. What is the concrete cover? 2.5 Okay, I will write it again. This is not okay. So, oh no. No result. What is the concrete cover? We have to find it. first, here, can we do like this? We put all this thing in ChatGPT and we ask to derive something from ChatGPT. Like what is complete cover in this? It's not given, so I don't think so. Search
So देखो ChatGPT होगी इसको देने का है 15 pages मेंशन नहीं होगा, इसमें हम लोगों को खुद ही ऐड कर देना चाहिए अब। सर 2.5 ही रखें ना नहीं, बहुत कम है 2.5। 40 millimeters, 40 to 70 millimeters. Number completely according to Google. वो keep 20 millimeter। बेसिकली साइज ऑफ एग्रीगेट डिफाइन करता है कितना होना चाहिए कंक्रीट कवर। सो इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट इज मेंशन्ड हियर, when concrete cover should be greater than the size of aggregate, coarse aggregate. Okay, you will model this cube again by keeping the height of cube as not 400, that will be 360. So total 40 minus कर लेंगे 20 ऊपर से 20 नीचे 360. Your cube will be internally located. How can we edit it, sir? We did, for example, 400 now. Can we edit it? Yes, you can edit it and move it. Click here. Here is the scale tool. Features, extrude, section sketch. Hopefully this will be Now left click on that it was If you want to change the dia, then click here. If you want to change extrusion, third dimension, then click here. Now the length we can change it. That's 400. Now it will be 360. Apply, regenerate. Okay, hopefully it has been changed. 360. Sorry, automatically After assembly, no, it will move towards coordinates. Now we have translated 20 millimeter upward. Here you can see the location. Position. You can see here. It is located on the bottom. So we have to translate it. What is the translation? Translation means to move from one point to other without rotating it. Rotation means rotation at an angular. So we will translate on Z axis. We will not disturb X and Y axis. We have to move 20 millimeter on Z axis. So come here. This is the translation. Click here. Oh, sorry. Here will be the somebody here. This is the translation. Okay, click here. Now select the part that have to be moved. Click here. Okay. We have to move 0, 0, and 20. We have to move 20 on Z. Click here. Oh, sorry, that was the peak point. So peak point is 0, 0, 0. Peak point means from the point where should it move? From bottom to the top. Okay. Peak point means which point will be initiated, will be moved. You can pick any point on the cube, but that will be complex. It is very simple if you pick this coordinate, that this is also located on the cube. We move 0, 0, 0 to 0, 0, 20. Here. Check the movement. That was focus on the cube. Yes, it has been moved.
Now you can click here and now cross check. 2020 from bottom and top. Now it is inside. That will be working on cube and FRP sheet. Where the FRP sheet is externally connected. Here, click here and you can see here. That is the column. That is the cube. That is the FRP sheet and that is tube. तो ये था असेंबली वाला स्टेप। उसके बाद अब इनकी इंटरेक्शन शो करनी होती है। व्हाट इज द इंटरेक्शन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ट्यूब एंड कंक्रीट। यू विल watch the video and clarify it completely. It's just properties, sir. No, property, and we will work on property later on. Here is interaction. Here you can create the interaction here. If you want to tie. What does mean, sir, interaction? Interaction means connection. Your interaction with your student. How much, how you are connected with your friend. That same thing. Yeah, but I don't understand this part. Interaction means the connection between two bodies. Okay. And there can be different type of tied, rigid, see, different connections. So you have to select which different types of connections. Sorry, you know, the chair has been made by a weld interaction, weld connection between this part and this part. Then it's really between this part and this part. That is made. yes, sir. Similarly, there is a connection of nails between this upper blade and lower part. This is the interaction. So if you want to define different types of connection on there, if you want embedded region, basically embedded region ये मैंने select किया ना, अगर पूरी की body एक body दूसरी में घुसी हुई हो, जैसा कि steel bar है, steel tube है, that must be selected for embedded region. अगर ये दो surface ऐसा के connect हो रही हैं, that must be connected with tie. इसमें तो embed हो गया ना, तो internal जो चला गया that is embedded. लेकिन जो external है वो आगे tie हुआ हुआ है, यानी sheet को आप tie करेंगे concrete के साथ, column के साथ, लेकिन internal tube को आप embed करेंगे. If we embed, that is constraint number 1. Continue it. Now, you're saying select the embedded region. We have to select the steel tube. Not there. So you will come here, hide the other parts. No, parts, hide the other parts except steel tube. Now click here. It will be selected. Done. Now select the host region. वो वाला region जिसने ट्यूब को रखा हुआ अपने अंदर. Yes, sir. Whole model कर complete की जरूरत है. Yes. That is simplified. Keep it general. Now fill it. बाकी parts आ गए. अब यहाँ पे अगर interaction पे यहाँ पे आगे क्लिक करें तो आपको ये constraint में ये show हो जाएगा. Tube has been connected, tied with the concrete. Similarly, you will create another interaction by using tie. There is a tie. In tie connection, you need a master and slave surface. External surface select as master and internal as slave. External means sheet is external, sheet will be master, and outer surface of column will be slave, because master and slave have to be connected. On column, you are wrapping a sheet externally by using. So select surface. We have to select the internal surface of FRP sheet. How? So hide the parts. Remove it. Column, remove it. Only sheet will be there. You can see here, only sheet will be there. So select the internal surface of tube. Done. Both have been selected. Now color. Purple color is the internal one. You can see here. We have to select the purple color here. Brown is external, purple is internal. We have to select the internal. Yes, sir. Purple. Now he is asking to select the slave.
surface type, and we have to select the external surface of column. Yes, Again, we will go there and hide all the parts and add only column, because we have to select the external surface of column that has been selected. Just clicking on general, keeping here. Field, recover all the parts. यहाँ क्लिक करने से सारे पार्ट्स वापस आगे कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो चुके हैं. ठीक है. So there are two constraints. First, the constraint between FRP sheet and column outer surface. Here is, and the other constraint is between tube and internal. Okay. समझाने आपने इनको, ठीक है. उसके बाद ये आपने लोड लगाना होता है. लेकिन लोड इन द फॉर्म आप ये दे दें. लोड में बाउंड्री कंडीशन देनी है आपने. लोड हम टॉप सरफेस लगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लोड, mechanical load, place here. It will be in Z direction. Z direction means in this direction. Okay. We have to create a step also here. Step means the increment of loading will be defined. After creating step, then we have to apply the load. Okay. Okay, you have already applied the load. Yes, sir. Fixed. Bottom and fixed. Yes, the top. So मुझे इसको remove कर देना होगा. We have already applied the load. Here is the load. In upward direction. Deformation, sir. You know, why is the arrow, see the arrow? What is upward direction? It should be minus. Why did it? Minus Z. Oh, yes, sir. It will be minus, now the load will be down. Yes. Have you already done the meshing? Yes, sir. Okay, now you will complete it. Take the results up. Work on the history outputs as well. Our results, sir. If you explain a bit. What should be explained? Your, it wasn't working. The results. Okay, in history output, we have to define something to take the answer. Okay, cancel it. Now we have to define a set so that we can take the answer. Create set. On the top surface, we have to check how much the top surface is compressed at how much load, so that we can get the load deflection curve. I'm defining the top surface as a set, and I will take the outputs on this top. Okay, now define here what is history output. Have we not created the set? Top surface is here. Why is the output not picking it? Okay, we create another history output for step 2. Now hopefully here will be the okay set. Top surface. Okay, we have to find the displacement in z-axis and force also in z-axis. Now the outcome will come for only force and displacement at the top surface. Okay. Now you will run the job. ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें. यहाँ से जॉब क्रिएट करने, जॉब क्रिएट हो जाएगी, फिर आपका यहाँ भी जॉब शो हो जाती है. Here is the job. You can submit here or you can submit from here also. Okay. Submit. Replace the previous one. Yes. Okay.
The following parts are not meshed. We have to mesh the steel tube and Yes, I would vote for because they were added later on. meshing the first part. So we will proceed it. All the parts have been selected internally and the mesh will be same. 20 millimeter कितना रखा हुआ है? 15 minutes, I think. 20 पे बात कर लें. Okay, so 20 पे कर लेते हैं again. Because your column is not so big. 20 का पहले. Okay, now you will assign the job. Click here, submit here, replace the previous one. If you don't need the previous, then replace them. So you know. Otherwise, change the name. So when we started another column, we should You should not check remove the this. previous. Yes. Alright, your 9 are missing property element. Okay. Property again. Because you have not defined the property yet, that's why we continue during next week. The Okay. property section is missing, so job is not submitted. Save it. Like in same file. So up to this stage, you will model all